Hello and welcome to my channel. I have brought a simple 5-minute snack recipe. This is chocolatey, soft and simply delicious. I am sharing a quick chocolate cream cheese filled French toast recipe. You're gonna love it. As usual, I have also recorded this video in Hindi. So let's begin. The first thing to do is to make a chocolate cream cheese. If you want, you can use Nutella as well. Just take a small blender, add 1/4 cup of paneer or cream cheese, add 2 teaspoons of powdered sugar, 1 teaspoon of cocoa powder, half tablespoon of butter, and half teaspoon of vanilla extract. Just blend it quickly for 30 seconds or so. Here, this is all ready. Let me show you how it looks. You can use this as a topping for your cupcakes, fillings for your breads, or as I'm using it today, in the French toast. This can be stored in the refrigerator for 4 days. If you're new to my channel, a big hello. And if you're my subscriber, a warm welcome once again. I hope you like my recipe. If you do press the like button. And don't forget to subscribe. Don't forget to hit that bell icon button for all the notifications of new uploads. Let's get our French toast going. So I'm taking 4 slices of bread. I'm going to generously apply my chocolate cream cheese on these slices. Make sure you're generous and cover all those edges. If your kids don't like, you can cut off the corners, but I think it's easier to make this bread if the corners are still there. Now let's keep one bread slice over the other and just press it. I'm going to just make it into half. If you want, you can create 2 triangular halves as well. It can be a rectangle, it can be a triangle. It's your take. Now in a glass bowl, I'm going to crack 2 eggs. Make sure your bowl is wide enough so you can dip your bread in it. Add 2 tablespoons of milk, a small pinch of salt. Do not add any sugar here. We are going to add a sweet cream filling inside and just whisk it together. Heat a griddle. Add 1 teaspoon of butter. Just spread it well everywhere. As soon as the griddle is hot, dip 1/2 of the bread in the egg mixture and we are now going to put it on our griddle. Repeat it with the other half as well. Flip after 1 minute and let the other side cook. Cook each side for around 2 minutes on a medium heat. Yeah, we can see that chocolate bubbling. We are aiming for a nice golden brown color. This sandwich is crisp from outside and gooey from inside. Just the melt in the mouth feeling. I think these are ready and we can remove them in the plate. Repeat the same process with the other 2 halves as well.
buttery and super crisp. Simple pleasure. I hope you enjoyed the recipe. If you did, do press the like button, subscribe to the channel. If you have any comments, do mention in the comment section below. Until then. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत सिंपल सी चॉकलेट क्रीम चीज़ की फिलिंग के साथ फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बनाने में लगता है सिर्फ 5 मिनट। और हाँ, आपके बच्चे आपको थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चॉकलेट फिलिंग बना लेते हैं। यदि आप चाहें तो आप न्यूटेला भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप मेरी तरह हैं और घर पर ही सब कुछ बनाना चाहते हैं तो आप इस चॉकलेट क्रीम चीज़ फिलिंग को बनाइए। एक मिक्सी में 1/4 कप पनीर ले लेते हैं। इसमें 2 चम्मच चीनी डालें, 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर डालें, आधा टेबलस्पून मक्खन डालें, थोड़ा वनीला एक्सट्रैक्ट डालें। अब इसको हम मिक्सी में करीब 30 सेकंड मिक्स कर लेंगे। देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। इसको आप अपने रेफ्रिजरेटर में 4 दिन तक आराम से रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको कपकेक्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वो बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना। अब एक स्लाइस को दूसरे स्लाइस के ऊपर रखकर दबा लेते हैं और इनको बीच में से कट कर लूंगी। आप चाहें तो रेक्टेंगल शेप रखें, आप चाहें तो ट्रायंगुलर शेप रखें, आपकी मर्जी है। एक चौड़े मुंह के बर्तन में 2 अंडे क्रैक कर लेते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून दूध डालिए और बस 1 चुटकी नमक डालिए। इसको चीनी की कोई जरूरत नहीं, इसको अच्छे से फेंट लीजिए। एक नॉनस्टिक पैन में 1 चम्मच मक्खन डालकर उसको फैला लेते हैं। जैसे ही वो गर्म हो जाए, अपनी ब्रेड को अंडे के मिक्सचर में डिप कर लीजिए और इस गर्म पैन में रख लीजिए। इसी तरीके से दूसरे हाफ को भी कर लीजिए। इसको 1 मिनट में पलट लेते हैं। अब हमने दोनों तरफ को 2-2 मिनट करीब पकाना है, जब तक कि हमारा टोस्ट अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही टोस्ट गर्म होगा, हमें अंदर का चॉकलेट थोड़ा पिघलता हुआ जरूर दिखाई देगा।
देखिए ये तो बन सा गया है। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। दूसरे दोनों हाफ्स को भी हम अंडे में डिप कर फिर से पका लेते हैं। इन चॉकलेट फिल्ड टोस्ट को आप या तो चॉकलेट सॉस के साथ या मेपल सिरप के साथ, दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए एक को तोड़कर देखते हैं। बाहर से क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट और gooey है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बारी ट्राई करना तो बनता है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यदि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। कोई कमेंट्स है तो ज़रूर मेंशन करिए। तो मिलते हैं।